there are a lot of service selection centers there in the around the country. 5 for army, 3 Bhopal में, 3 for army, 1 is naval SSC selection center south Bangalore का, selection center central, selection center east Allahabad, selection center central Bhopal, selection center south Bangalore. AFSB is a lot of Air Force selection boards as well who select officers to you go through 5-day interview process. I will be telling what is the process to join armed forces as an officer. So there are different boards. So next, SSB interview. What is SSB interview? It is 3 prolonged selection system: the Mansa Vacha Karmana, or the psychological test, or the personal interview, and group testing officer. It is a 6-day selection process. Assessment of personality traits and non-technical competence. Non-technical competence means it is hence you will be getting responsibility of around 100 to 150 men at the age of 21 years. ठीक है, तो they see everything in you. कि whether it is a test of personality only. ठीक है, no technical competency कि who else is good in some mechanical wala thing or etc. So there is 15 officer-like qualities identified for the evaluation. 15 OLQs basis interview is scheduled. Interview is technically made the selection process etc. So next, SSB interview is 3 prolonged selection process. The interviewing officer, the psychologist, and the group testing officer. Means the interviewing officer is your Vacha. Vacha means ki you will spend around 1 hour or 30 minutes with interviewing officer. He will not interview you. He will ask simple questions related to your personality. He will ask how many friends you are having, what are the negative qualities, what are the positive qualities, which you want, which you like the most, and the improvements you want in your friends, etc. How many members in your family, what are your hobbies, if you play some sport, they ask simple questions related to your sports, etc. So it is not like an IS or interview. He will ask things related to your life only. And believe me, if candidate goes and interview, etc., so he acquire a lot of knowledge around the globe. Okay, he acquire a lot of knowledge, but he is empty inside. He is not aware about his own, what is going in his life, how many members are there, the positive, negative things, so he is unaware. So they see these simple things, whether you are aware about it or not. Psychologists assess you by writing stories. They give you spontaneous words to write sentences. Suppose they give you life, you write a sentence. Suppose they give you fan, you write a sentence. Suppose they give you playground, you write a sentence. So there are 60 words back to back for 15 seconds. You need to look at the word and write your response. And first is you will be shown a picture. Suppose I am standing with a mic and you are sitting, ये picture आ जाए, so you have to write a simple story. So back to back 12 stories you are supposed to write. In psychological test, first portion is which is thematical perception test. Second one is word association test, in which you are supposed to write sentences thing. Third one is SRT. SRT is situation reaction test. Situation reaction test is you will be given a lot of situations, how you react in this situation. Suppose while going late night movie wala show, let us be. Let those who want to sleep, they can sleep, they can take power nap as well. Your teachers will not ping you up. I will not mind it. Take power nap as well. सुबह जल्दी उठना होता है. So suppose you will get an SRT, you are returning home from late night movie show for girl candidates, and some people are teasing our sister or something. So what he will do? Suppose at the time of board examination, his or her father got serious ill. What he does is that suppose some SRT come, he is in need of some interview wali thing, he boarded on the wrong train. After one hour he realizes he does this. So you give simple responses regarding it. And after that, in psychological test, there is a SDT, it is a self-disruption test. I will be telling further about this test. Group testing officer take
you spend the most time of the SSB with group testing officer. He tests you with the groups. So next. Selection process is day one is arrival, submission of documents, completion of the personal information questionnaire, etc. So you will be surprised by knowing one more thing. Ki if you pass written examination of UPSC, okay, you are going to there is possibility that you are not being interviewed as well, because there are 70% of candidates who are not able to clear the stage 1 test, which is the screening test. They do not take interview. Suppose 500 candidates, I will be giving you an example. Suppose 500 candidates have cleared the written examination, so they will not interview 500 candidates. They will interview around 20 or 30 candidates only. For that, they take a screening test. ठीक है, स्क्रीनिंग वाला टेस्ट में दे टेक अराउंड 20 और 30 कैंडिडेट्स एंड रेस्ट दे विल टेल कि हाँ भाई जाओ. तो योर रिटर्न वाली मेहनत सब बर्बाद हो गई पहले दिन तुम्हें, क्योंकि पूरा टेस्ट ही देने को नहीं मिला. तो इसलिए इसको थोड़ा सा चटक बनने चाहिए होते, थोड़ा स्मार्ट लोग चाहिए होते आर्मी में. ठीक है. Second is day 2 is stage 1 testing, wire test. There are a lot of tests, etc. Stage 2 is psychological test. I have told you about. Day 4 and day 5, as I have told you, spend the most time with GTO, and the last day is board conference. You will be sitting with around 15-16 officers, and you are asked some questions. I will be telling. So next. So these are officer-like qualities. I'm not going to tell why. I'm not going to explain them because it will take around couple of hours if I start telling these qualities, because these qualities are equally beneficial for your life as well, for your education, for your lifestyle. If you impart these officer-like qualities in your life, so as a civilian, being a civilian, you will do extraordinary work in your life or in your studies or in your irrespective of the field, you will do marvelous job if you are having these qualities. And next one is, sir, what is the selection process? OIR test. OIR test is a simple reasoning test of officer intelligence rating. On behalf of you will get how much intelligence are you having. This is a simple reasoning test, a verbal and non-verbal reasoning test. आपके कंप्यूटर वाले पेपर के साथ होता है ना, reasoning आते हैं questions junior classes. And second is PPDD, picture perception and discussion test. This is stage 1 testing. If you are not able to clear stage 1, you are not supposed to give entire assessment interview. Third one is group discussion. Next is WAT वाला thing I have told you ना, 15 second per word, positive, not grammar नहीं देखते हैं, they see your personality, etc. Second is SRT, situation reaction test, 16 routine situations. And that is 12 stories, 1 blank, 3 minutes per story, self-description, etc. These are the psychological. But do not go in the technical things. Na? Next is, sir. The very first day, when you report at the SSB centers, you are like these raw rice, kache chawal. And the very first image which came in front of you when peeping ceremony was there, you comes out from the academy as a paka hua chawal or a biryani or whatever. Must carry items for the assessment to do. Some documents are there. So next. So this type of hall is there. So you will be testing. So next. Stage 1 is next, sir. Next. So logical reasoning. These kind of questions can be asked. You can solve them. कि हाँ भाई रुपए का साइन ऐसा है, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ऐसा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इन द सीरीज, है ना. Some simple type of reasoning test, है ना. This is reasoning test. There are a lot of this test is known as non-verbal reasoning test. So next, and then comes the picture perception and discussion test का sample वाला image. You need to write a simple story. ठीक है, आपको इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है. यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द पिक्चर कि देयर इज अ लेडी जो एयर हॉस्टेस जैसी लग रही है, पुलिस में लग रही है, या एक कार है, पीछे थिएटर है, उसने किसी को मार दिया, फिर क्या एक्शन लिए, क्या ये. यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द पिक्चर. ठीक है, यू नीड टू राइट एन स्टोरी, राइट अ स्टोरी सिंपल कि राम श्याम राधा जो भी कैरेक्टर है तुम्हारा, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट और ये ऐसा देखा, उसने एक एक्सीडेंट हो गया, उसने क्या एक्शंस किए, एक्सेट्रा वाला थिंग्स. सो नेक्स्ट, देन यू हैव टू नरेट योर स्टोरी इंडिविजुअली इन फ्रंट ऑफ assessors, and it is in this test you are be easily assessed by assessors whether you are having good confidence, things, etc. So they ask you to make a common group story, है ना. There are I
I guess around how many of you are there in a one row? Around 100 or 150 students are there, na? So everyone, one's perspective or the perception is different. So everyone writes different stories. So assessors ask you to make a common group story. They will divide you, subdivide you in groups. They will make a group of 15. They ask those 15% to make a common group story. It is your smartness, it is your chakki, it is your intelligence. How you, with your confidence, etc. How you need not to dominate the group, you have to cooperate, etc. तो वो करके तो this kind of discussion happens. Sir, next. Okay, ये discussion वाला था. ये मेरी कैंट की क्लास है, मैंने फोटो ऐसे लगा दी उसमें. Next is. उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि अब इस बैच में केवल 10 बच्चे लिए गए. इन 10 का केवल इंटरव्यू होगा. ठीक है? They have cleared stage 1. केवल 10 candidates. And how many have cleared in interview? ठीक है? तो stage 1 is very important. So suppose ये entry is UTEN. UTEN technical entry scheme might be there, I guess. Next, then psychological test. Suppose this story comes. This story is in front of you for half minute, and you need to write a good story regarding this picture for 3 minutes. Next, sir. And consequently, you will be getting 12 stories, 11 stories and 1 blank. And you just write stories. Do not more than that. And 11 pictures will be shown and it disappears after 30 seconds. Candidates are write a story on these pictures for 4 minutes. Word association test. The 60 words will be shown back to back for a period of 50 seconds. 15 seconds हो गए, 50 seconds हो गए. लग रहा है किसी ने बोल के मैंने 15 बोला होगा, 50 कर दिया. Candidates have to write thought comes after their mind. Next, SRTs है ना, कैंडिडेट गेट बुकलेट विद 60 सिचुएशंस, जैसा मैंने आपको बताया था. सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज whether you are self aware or not. In self description test you are supposed, what do your parents think about you, what do your teachers think about you, what do your friends think about you, what do you think about yourself, and what kind of person you want to be in your life. ठीक है? और जिस टाइप की वो कैसे असेस करता है. You need not to know. Next, suppose एक SRT आई, उसमें बोला while watching a movie at a theater you hear shouts fire. You have to write his responses, etc. है ना? क्या करेंगे वहाँ पर? अभी जनरली क्या होता है थिएटर्स में, जैसे अगर ये थिएटर होता तो इस जगह पर फायर वाली बाल्टियाँ लगी होती ना एग्जिट गेट के पास. You can use them और जो भी आप करेंगे. Next is, as a part of adventure group you are going for a rock climbing site. En route it starts raining and your bus driver says it will be of no use going there. Now you will. अब आप जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, बारिश होने लगी, बस का ड्राइवर कह रहा है जाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो they see your simple responses की, and they got to know कि हाँ भाई what kind of personality you are and कैसे हो आप. Next is GTO टेस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं. Next आइए सर. The group discussion sir. Next, group discussion, group planning exercise. As next, there are a lot of things. You will given a model like this, ठीक है? And you will give a story regarding this model in which ये लिखा जाएगा कि आप कहीं पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, वहाँ पर आप पिकनिक मना रहे थे, तब तक आपने देखा कि जो 3 बजे मिनिस्टर का कॉन्वॉय आ रहा है, तो वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स ने बॉम्ब लगा दिया है. और सपोज आसपास कोई मंदिर है पुराना, उसके पुजारी को गोली मार दी. फिर कह दिया कि कहीं पर ट्रेन का कुछ हो रहा है. मतलब यू आर मतलब गिवन सिचुएशन एक्सेट्रा कि हाँ ऐसे करके मॉडल आता है और एक सिचुएशन होती है उसमें 3-4 आपको अपना प्लान लिखना होता है. दैट प्लान बी सो क्लियर, दैट प्लान बी सो क्रिस्टल कि जिससे कि अगर वो प्लान किसी और को भी दे दिया जाए, उसमें डायरेक्शंस लिखनी होती है, स्पीड लिखनी होती है, टाइम लिखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो उसका इसका मीनिंग ये होता है कि अगर वो प्लान किसी थर्ड पर्सन को दे दिया जाए तो वो इजिली एग्जीक्यूट कर ले. कितने बंदे चाहिए, कितना क्या चाहिए, एंड यू विल बी एंटाइटलिंग अराउंड 15 मिनट्स टू राइट द प्लान. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस होती है. नेक्स्ट इज दे असेस यू बाय मतलब डूइंग दीज सिंपल एक्टिविटीज, है ना. इट इज लाइक गेम, isn't it? अभी तक इंटरव्यू में कुछ कठिन लगा आपको? राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग रिस्पॉन्सेज, सिचुएशंस,
है ना। और ग्रुप प्लानिंग कितना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है ये। इसमें क्या गेम खेलना है, बिना जमीन पे पैर रखे जो चीजें आपको दी गई हैं उसको आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक जाना है। ऐसा कोई इंटरव्यू होता होगा ऑफिसर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज सर, अगेन नेक्स्ट लेक्चरेट एक्सटेम्पोर होता है ना, एक कार्ड मिलता है एकदम से रैंडम टॉपिक मिल जाएगा आपको 3 मिनट के लिए उसके ऊपर बोलना होगा, तो इस तरह का होता है। नेक्स्ट इज ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है जिसमें आप ग्रुप्स में ये ऑब्स्टिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं, स्नेक रेस भी बोला जाता है इसको। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स 10 होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज सर ये टाइगर लीप, कि ये रस्सी आपके हाथ में नहीं आती है, आपको टाइगर की तरह लीप लेनी होती है इस रस्सी को पकड़ने के लिए, तब ये हाथ में आती है और कोई ऑप्शन नहीं है इस रस्सी के अलावा। जब व्हेन यू जंप ना तो यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन कि तुम्हें रस्सी के अलावा कुछ और मिलेगा नहीं, या तो नीचे बालू में गिरोगे, तो ये हाइटेड होता है काफी। नेक्स्ट सर कमांडो, ये दीज ऑब्स्टिकल ये एक ही टेस्ट का पार्ट है, ये एक ही टेस्ट का पार्ट है जो कि अराउंड हाफ एन आवर में हो जाता है। कई सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको जा करके करना होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है। मतलब एवरी टाइम दे सी दे चेक योर ब्रेन ओनली, ठीक है। यू नीड नॉट टू बी एक्टिव, मतलब यू नीड टू बी एक्टिव, बट इफ यू आर नॉट एक्टिव, इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, तो दे सी योर ब्रेन, दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन मेक यू फिजिकली फिट during the training. But if your brain is not workable, if your brain is not rational, if your brain is not reasonable, so they do not accept you as an officer. So next sir, again next sir. हाँ, इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। ये 1 आवर का इंटरव्यू होता है, सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। ही आस्क्स सिंपल क्वेश्चंस, इट इज नॉट एन इंटरव्यू, इट इज जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट फॉर अ सीनियर विद द सीनियर ऑफिसर। He see कि whether you are capable of getting around 100 to 200 salutes every day, whether you are able to getting around this much मतलब honor and the thing, मतलब you cannot correlate. Those who are from defense families can correlate to it कि how devoted the मतलब your junior mates are. Even मतलब I was in Hyderabad in March, so in my mess I went inside, my wife went inside, so 2 officers were having lunch। तो फौज में फीमेल आर्मी वाइफ्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो दे बोथ स्टूड अप, मेजर एंड कैप्टन, दे बोथ स्टूड अप, दे वर हैविंग देयर लंच। तो इसलिए मैं भी कम चाह रहा था कि मैं जाऊँ इन्वॉल्व हूँ उसमें। तो इस तरह का यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि रफली 100 सल्यूट्स एवरी डे, लगभग 100 सल्यूट। जब तुम खड़े रहोगे लोग चलते रहेंगे आसपास से, तुम्हें सल्यूट करके निकलते रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बैक भी करना वो नहीं, क्योंकि इतने सल्यूट मिल रहे हैं तुमको, जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ सल्यूट मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज, तो वो सिंपल से चेक करता है सर। नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट इज सर yes, now the final board conference after psychological test and video वाला test, the final board conference होती है जिसमें सारे एसएसएस एक साथ बैठते हैं, जिसमें कि जो इंटरव्यू ऑफिसर्स हैं वो साथ में बैठेंगे, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब साथ में बैठेंगे, और जो जीटीओज हैं वो सब साथ में बैठेंगे, और कैंडिडेट आएगा 1 to 1 और उसने कैसा टेस्ट किया है, कहाँ गलती करी है, वेदर दे शुड सिलेक्ट हिम और नॉट, हर और नॉट, तो दे डिस्कस। नेक्स्ट इज सर, ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है। तो इतने सारे ऑफिसर्स के बीच में आप अकेले बैठते हो और दे आस्क मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड टू मतलब योर मतलब 5 डे का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर, तो रिलेटेड टू इट, ठीक है। सर कट कर दीजिए इसमें। Okay, thank you so much. As my class was scheduled in cantonment from 10 a.m. and I am late, but I have requested training officer ma'am कि I will be reaching by 10:30. So thank you. If you are having any questions related to armed forces, you can ask. If you want anyone, or if you take my number from, you can take it from office. If you are having any query related to armed forces etc. तो you can join these classes, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ पार्ट कराने के लिए। जो पूरा एसएसबी का इंटरव्यू वाला प्रोसेस है ना, किस टेस्ट में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं पढ़ाता हूँ कैंट में। और अभी बच्चे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक क्लासेस होती है, सर्विंग ऑफिसर्स आते हैं। तो डू नॉट गो टू काकादेव एक्सेट्रा टू पे अराउंड 22,000 और 25,000 रुपये फी, क्योंकि एसएसबी के टीचर्स नहीं मिलते जल्दी, तो वो 20-22 हज़ार रुपये फी चार्ज करते हैं आपसे 15 दिन की। तो वही चीज़ मैं 200 कराया था आप लोगों को बताने के लिए कि दोस्त हु विश टू जॉइन फोर्सेस, तो दे कैन
take my classes in cantonment in just 250 rupees. Okay? Chaliye, thank you so much. You don't have any queries, children? Clap for sir. Thank you for giving such a valuable information regarding the armed forces. I respect all the army personnel very well. But I have one doubt, sir. Like sometimes these children are not asking any question, but I remember last year, one child of commerce was having the commerce stream and not having the applied maths. He was asking that whether I can pursue my career as a he will appear for the NDA. That child appear for the NDA. If the student is there in 11th class, the child can appear. Yes, but he has to clear written वाला portion. इसमें 11th 12th की maths आती है. If he is capable, irrespective of the उसका result या if he is capable of clearing written examination. That exam will be based on 11th class mathematics. In that maths is required. He can Study. He can study apart from the academics and prepare for the rest and appearing. Suppose if the child is appearing in class 11, so what is the syllabus for MBA at that time? 11th and 12th both? हाँ, इसके लिए सबसे आसान चीज मैम ने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि ब्रेकडाउन कैसा होता है। तो इसका 11th और 12th की मैथ्स आती है, मैथ्स का पेपर होता है। सेकंड पेपर इज ऑफ जीएस, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पेपर फिजिक्स का होता है और एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर जनरल एबिलिटी का होता है। तो देयर आर 2 पेपर्स, वन इज मैथ्स, वन इज जीएस। तो मैथ्स आपकी 11th 12th की आएगी, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जरूर लगाना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स आती है। यूपीएससी यूपीएससी नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस के एप्लीकेशन होते हैं उस पर दे आस्क क्वेश्चंस। तो मैथ्स आएगी और जो जीएस का पेपर होगा उसमें भी 11th 12th की फिजिक्स आएगी और अगेन इंग्लिश। एंड जो 10th तक आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो कुछ भी पढ़ा है आपने 10th तक, तो उसका सोशल स्टडीज वाला पोर्शन आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे। सिंपल होता है। तो आपको मैथ्स और फिजिक्स अपनी अच्छी करनी है, ये समझ लीजिए। अगर जीएस के पेपर में भी आपकी फिजिक्स अच्छी है तो जीएस का पेपर क्लियर हो जाता है, मैथ्स का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश मुझे लगता है कि आपकी अच्छी होगी। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ एक समस्या है, हिंदी लिख नहीं पाते और इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। Anyway. Any question? Yes, please. Actually, there was one question, like if someone wants to go through any or medical services. So one of the major issue right now we all are to face like eyesight problem. But means there's like a criteria. It's like one should have less than -3. But is it possible you can just go for laser operation or something? Yes. Army allows for the laser. Rajwar was also wearing the spectacles, but he got operated with eyes. Any other question? Please, if you are having any doubts, etc., to collect it. I will be coming to take session of grade 9 and 10 as well. You can join the session as well. So you can ask your doubts in that session. Right now I am running short of time, so kindly allow me to go. Yes, one doubt is there. Yes, you can ask. Yes, you can join. Yes. Yes, you can give the upcoming attempt in September. सितंबर में अभी एनडीए का पेपर होगा, जो 11th में है, they can appear for it. Sorry. जो 12th वाले देंगे आपको, 11th वाले नहीं। अगर आप 12th में होते तो सितंबर वाला दे दे कि जब तक आपका रिजल्ट आता तब तक आप सिलेक्शन प्रोसेस वाला चीजें क्लियर करते, साइमल्टेनियसली आपका रिजल्ट आता और आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। तो 12th अपीयरिंग में दे सकते हैं 11th के बाद, 11th पास करने के बाद। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, धीरे धीरे क्वेश्चन यहाँ तक तो आ रहा होगा, इसके बाहर नहीं आ रहा होगा ना, तो यहाँ से निकाल दो, आप पूछ लो जो पूछना है, या फिर लिख करके ऑफिस में आप रख देना अपने क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है तो। आई विल कम एंड आई विल क्लियर। ठीक है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो डाउट्स? शैल आई गो?